हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। लास्ट वीक आज खत्म हो चुका है और आज है फ्राइडे। तो आइए देखते हैं कि लास्ट वीक पूरे मार्केट में क्या क्या इंटरेस्टिंग हुआ है विद द लेंस ऑफ अ टेक्निकल एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कैसे हैं बाकी सभी लोग हमारे यहाँ पे। हाय सभी को, है ना। तो स्टार्ट करने से पहले आइए सबसे पहले हम देखते हैं ब्रॉडर मार्केट्स को। तो हम सबसे पहले देखेंगे नेस्डेक 100 को कि ब्रॉडर मार्केट्स पे क्या कुछ खास हो रहा है। तो हम सबसे पहले ओपन करते हैं नेस्डेक 100 का वीकली चार्ट। तो जैसे आप देख पा रहे हैं नेस्डेक 100 के वीकली चार्ट पर आपको लगातार लोअर लोज देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, है ना। बट फ्रॉम सम लास्ट टाइम करीब करीब 10 अक्टूबर के बाद से इसमें कोई नया लोअर लो नहीं बना है। तो अगर हम इसमें एक सपोर्ट जोन मार्क करें तो आपको करीब करीब यहां पर एक अच्छा सपोर्ट जोन यहां देखने को मिलेगा। टेक्निकल एनालिसिस की ये सबसे अच्छी बात होती है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो आप वह एनालिसिस भले आप यूएस के चार्ट पे करें, इंडिया के चार्ट पे करें, आप सभी चार्टों पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पहले भी एक सपोर्ट जोन था जहाँ पे नेस्डेक 100 ने एक सपोर्ट लिया था एक बार, उसके बाद अगेन 2 3। ठीक है, तो क्या अभी हम मान सकते हैं कि नेस्डेक 100 जो है यहाँ अब पलट चुका है या उसमें एक रिवर्सल हो चुका है? तो नहीं, क्योंकि अभी जब तक ये अपना जो भी इसका प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक करके एक नया हाई लगा के लोअर हाई नहीं बनाता है जब तक इसका ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। तो अभी हम इसको क्या बोल सकते हैं, अभी ये बेरिश टू साइडवेज हो चुका है। जब तक ये सपोर्ट के ऊपर है तो हम इसे साइडवेज बोल सकते हैं, लेकिन अभी भी ये डाउन ट्रेंड में ही है। चलिए आइए हम अमेरिका का ही दूसरा इंडेक्स देखते हैं, डो जोन। तो क्या इसमें भी सेम नेस्डेक जैसा है? नहीं, है ना। आप इसमें देख पा रहे हैं ये जो था इसमें भी एक डाउनफॉल था, लेकिन इसने एक नया हाई बनाया और एक छोटा सा स्विंग लो बना के ये अगेन ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और जो इसमें लास्ट वीक है, लास्ट वीक में मतलब जो वहाँ पे अभी करंट वीक है, अभी आज का ट्रेडिंग सेशन वहाँ पे और बाकी होगा, लेकिन इसने अभी वहाँ पे 1.66% की रैली दिखाई है। ठीक है गाइस, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने इंडियन मार्केट को देखना। आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं इंडियन मार्केट का सबसे पहला वॉलेटिलिटी इंडेक्स देख के, इंडिया का जो है इंडिया विक्स। अगर आप इंडियन विक्स देख पा रहे हैं तो इंडिया विक्स जो है इस वीक 3.76% का डाउनफॉल उसमें हुआ है। इसका सेम नतीजा हमें देखने को मिलेगा जब इंडेक्स में देखेंगे, तो वहां भी जो वॉलेटिलिटी श्रिंक हुई है वो हमें इसमें देखने को मिलेगी। तो आइए अब देखते हैं निफ्टी का चार्ट। तो हम यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे। हाँ, तो आप जैसे वीकली कैंडल देख पा रहे हैं, आप सभी लोग मुझे बताइए, आप जो निफ्टी 50 की वीकली कैंडल देख पा रहे हैं ये एक कौन सी कैंडल है? ये बहुत ही एक आसान कैंडल है, जिसका मतलब होता है कि अब जो अभी मार्केट है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट में है, जहाँ पे सेलर और बायर दोनों ही एक कंफ्यूजिंग स्टेट में है और सोच रहे हैं कि यार मार्केट का असल में डायरेक्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये है एक डोजी कैंडल। तो इस वीक मंडे को मार्केट ओपन हुए थे 17,952 पे और इस वीक मार्केट क्लोज हुए हैं 17,956 पे। तो अगर आप देखें तो पूरे वीक में मार्केट ने मात्र 4 पॉइंट मूव करा है। ठीक है, पर मार्केट ने अपसाइड और डाउनसाइड में करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर नीचे वो हुए हैं, लेकिन ये एक डोजी कैंडल है। तो आइए वीकली कैंडल्स, वीकली चार्ट पे हम एक सपोर्ट निफ्टी का ड्रॉन करते हैं। तो आप यहाँ पे हमें एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। जब यहाँ से एक रैली बनी थी, जिसे हम रैली बेस रैली का कंसेप्ट भी देखते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी कैंडल थी, अगेन एक बेस कैंडल और अगेन एक बहुत अच्छी रैली थी। ठीक है, और यही एक प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल भी थे, जहाँ से मार्केट एक 1 टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, 3 बार वहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था।
ठीक है, तो ये एक लेवल मार्केट का सपोर्ट लेवल हो सकता है। आइए इन लेवल्स को, मतलब 17,700 के लेवल्स को ऑप्शन और डेरिवेटिव चार्ट्स पे देखते हैं कि वहां से भी इस अगले वीक के लेवल्स वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये है निफ्टी का 19 जैन की एक्सपायरी का। चलिए, तो आप यहाँ पे अभी देख पा रहे होंगे जो हमारा सबसे ज्यादा हमें पुट साइड पे, क्योंकि पुट साइड पे जहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई होगा वो एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा, और कॉल साइड पे सबसे ज्यादा ओआई जहाँ पे होगा वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। ठीक है, तो हमें सबसे ज्यादा ओआई कहाँ पे देखने को मिल रहा है? हमें स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा ओआई देखने को मिल रहा है 1,52,000 का 17,900 पे, और उससे ज्यादा देखने को मिल रहा है करीब करीब 17,800 पे। ठीक है, तो जो हमारा अभी इनिशियल सपोर्ट होगा निफ्टी का वो 17,900 है, उसके बाद 17,800 है अकॉर्डिंग टू दिस। और सबसे ज्यादा ओआई चेंज कहाँ पे हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा नए पुट कहाँ पे लोगों ने परचेस करें या सेल करें, जिससे पता चले कि यार नहीं आ रही, नए लोगों के हिसाब से भी यहाँ पर ज्यादा ओआई बिल्ड हुआ है, जिससे वही ऐसा अच्छा सपोर्ट है, तो वो भी है 17,900। अगर हम सेम चीज देखते हैं हमारे कॉल साइड में भी, तो आपको सबसे ज्यादा ओआई 1,17,000 का 17,900 पे ही देखने को मिलेगा। इसका मतलब है हमें अभी मैक्सिमम ओआई दोनों एटीएम पे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट हो सकता है कि अगले वीक की साइडवेज हो। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो अगेन बैंक निफ्टी ने भी इस पूरे वीक में एक डोजी क्रिएट करी है, मतलब बैंक निफ्टी में भी जो सेलर्स थे बायर्स थे दोनों बड़े कंफ्यूजिंग स्टेट में थे कि असल में बैंक निफ्टी का डायरेक्शन क्या होगा, है ना। हम इसमें एक सपोर्ट जोन मार्क करते हैं। तो जो हमारी थ्योरी है बहुत ही बेसिक थ्योरी, उसके हिसाब से आप अगर देखेंगे तो ये एक पहले रेजिस्टेंस था, एक बार, दो बार, तीन बार, और फोर्थ टाइम पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था। और ये रेजिस्टेंस जब ब्रेक हुआ था इसने क्या फॉलो करा था? रैली, बेस रैली। तो यहाँ पे एक रैली आई, दो कैंडल्स की बेस कैंडल बनी, देन अगेन एक अच्छी रैली आई। ठीक है, तो ये जो हमारे लेवल्स हैं ये सपोर्ट लेवल्स हैं। तो अभी जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है वो है करीब करीब 41,700। ठीक है, आइए हम इसका डेली चार्ट भी देखते हैं। अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी कि जैसे ही मार्केट इस रीजन में आता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक हैमर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। हैमर फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जैसे ही मार्केट इन लेवल्स के पास आता है वहाँ पे बहुत सारे बायर्स पहले से ही बाइंग करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे 1, 2 और 3 दिन से लगातार हमें यहाँ पे हैमर देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे बायर इंटरेस्टेड हैं बाय करने में। ठीक है, हम इसका भी ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, डेरिवेटिव एनालिसिस करते हैं। तो आप देख पाएंगे कि जो अभी हमारा सपोर्ट कहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है वो हमारा एज अ सपोर्ट होगा। तो जो हमारा अच्छा सपोर्ट है तो आप देखेंगे कि 42,000 पे सबसे ज़्यादा पुट की राइटिंग हुई है, वो है 1,17,000। ठीक है, और वहीं पे सबसे ज़्यादा ओआई चेंज भी है पुट साइड में, मतलब 65,000 का। ठीक है, तो जैसा हम चार्ट पे देख पा रहे थे कि 41,700-800 के पास आ रहा है तो मार्केट वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। तो अभी भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओआई राइटिंग है पुट में, मतलब ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, नीचे जाके एक लोअर हाई बनाता है, देन मार्केट में एक बेरिश मूव स्टार्ट होगा, नहीं तो ये ऐसा अच्छा सपोर्ट एक्ट करेगा। ठीक है, अब आइए हम रेजिस्टेंस देखते हैं अकॉर्डिंग टू ओआई। तो ओआई में हमें सबसे ज्यादा ओआई कॉल साइड में 42,500 पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं 73,000 का वो भी। ठीक है, और जो चेंज इन ओआई है वो भी सबसे ज्यादा कहां पर है? वो है 42,500 पे। ठीक है, तो जो अभी हमारा बिल्कुल फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा बैंक निफ्टी के लिए वो होगा 42,500 अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस।
आइए देखते हैं कि इस वीक में हमारे कौन कौन से सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म करा है। तो इस वीक में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है निफ्टी मेटल की। तो हम निफ्टी मेटल का चार्ट देखेंगे। ठीक है, जैसे निफ्टी मेटल बहुत वो था, तो आप देख सकते हैं कि इस वीक जहां निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही डोजी क्रिएट करी थी, है ना, वहां पर निफ्टी मेटल ने इस वीक करीब करीब 2.58 की रैली दिखाई है। तो आपके जितने भी मेटल स्टॉक होंगे, फॉर एग्जांपल जिंदल स्टील, टाटा स्टील, इन सब ने इस वीक अच्छी रैली दिखाई। ठीक है, और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई के पास भी पहुंच चुका है और मेरे ख्याल से ये अपने ऑल टाइम हाई को इसने ब्रेक भी कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हो सकता है हमें एक अच्छी नई रैली निफ्टी मेटल्स में देखने को मिले। ठीक है, हम निफ्टी आईटी देखते हैं, एक और इंडेक्स। ठीक है, तो जैसा निफ्टी आईटी में हो रहा था, ये अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास था और फिर उसने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया जिसका उसने ब्रेकआउट भी दिया था, लेकिन वो एक फेक ब्रेकआउट हुआ और अगेन निफ्टी आईटी नीचे की ओर आया। तो हम अभी निफ्टी आईटी को देख के क्या कह सकते हैं कि निफ्टी आईटी अभी बेरिश टू साइडवेज है। जब तक वो अपना प्रीवियस हाई ये है जो कि इसको ब्रेक करके एक नया हाई नहीं बनाता, जब तक निफ्टी आईटी हमें साइडवेज टू बेरिश रहेगा। ठीक है, आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। चलिए, तो ये था टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा अगर हम इसके अलग अलग स्टॉक के चार्ट देखेंगे तो आप उसको और अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। आइए हम एक लास्ट निफ्टी में जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो देखते हैं और उसके बाद हम फंडामेंटल एनालिसिस के लिए वसंत भाई को बुलाएंगे। ठीक है, तो अगर आप रिलायंस को भी देखेंगे तो रिलायंस इस वीक थोड़ा कमजोर था, मतलब उसमें 2.73 की गिरावट आई है ना। आइए रिलायंस में एक बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस करते हैं। रिलायंस मान लीजिए पहले इस बॉक्स में था, ठीक है, और इस बॉक्स के ब्रेकआउट के बाद अब रिलायंस इस बॉक्स में आ चुका है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। तो ये डार्वर्स बॉक्स थ्योरी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि जब भी कोई भी स्टॉक अपने एक बॉक्स से बाहर निकलता है वो एक दूसरे बॉक्स में होता है। जब इसमें यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो वहाँ से रिलायंस हमें एक नई रैली दिखाएगा और जब तक रिलायंस इसी रेंज में रहने के चांसेस हो सकते हैं। और रिलायंस यहाँ पे कब से है, 2021 अक्टूबर से लेके अभी तक रिलायंस इसी रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। हाँ, तो रिलायंस में अभी कोई भी पैटर्न बनता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि जो इसका सपोर्ट है, जहाँ इसका लास्ट टाइम का ब्रेकआउट था, वो अब एज सपोर्ट एक्ट करेगा। तो 2300 के करीब करीब का सपोर्ट है और जिसका अभी रेजिस्टेंस है वो है 2800। ठीक है, तो जब तक ये किसी एक साइड ब्रेकआउट नहीं देगा हम नहीं कह सकते कि रिलायंस की क्या डायरेक्शन होगी। ठीक है, चलिए अब हम बुलाते हैं वसंत भाई को फॉर फंडामेंटल एनालिसिस और जानते हैं कि अभी देश दुनिया में क्या हो रहा है। वेलकम वसंत भाई। थैंक यू मयंक भाई, थैंक यू फॉर दैट एनालिसिस। तो अब हम देखते हैं कि फंडामेंटली क्या हो रहा है। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग फंडामेंटली। आई एम सॉरी आई वोंट बी एबल टू स्पीक टू मच इन हिंदी। मेरी हिंदी मयंक भाई जितनी अच्छी नहीं है, तो आई विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश, बट बीच बीच में आई कैन प्रॉब्ली से समथिंग इन हिंदी. But before I begin, I will just list down, what are the things that I want to cover. But before I start listing down those, give me a quick hi in the chat. Let me know. I want to see who are connected with us today, who are we talking to. So just give me a quick hi in the chat just to see who I am talking to today. Yeah. So I want all of you guys to give me a hi. I can see there are 20-30 people with us today. So all of you guys, if you can quickly give me a hi in the chat, that would be very, very nice to see. So by the time you guys are giving me a hi, there is some lag. So meanwhile, what I'll do is I'll list down what I want to cover today. But meanwhile, I want a hi from everyone. So the first thing I want to cover today is gold rush. So what is gold rush? Gold rush kya ho raha hai? Gold rush, we'll see something about this. Then, well, result season.
results are coming out, and it always starts with this bunch, the IT companies. So IT results, how are they? Let's talk about that. Well, we have got the old problem of those bad cough syrup. Yeah, made by Indian companies, bad. So cough syrup problems. Then we had a recent Auto Expo that happened. Auto Expo mein, there were a couple of things happened. One of the best things was that we are getting new EVs. So good for the entire country. We'll talk about this as well. What is going to change with this? Then, well, COVID doesn't seem to go away, dude. Some states in India are also doing some kind of restrictions to COVID. So sticky COVID. COVID kab jayega? We'll also talk about this. Then there are trade talks going on with the European Union. So India and EU trade, what's going to happen? What does this look like? And finally, I just saw a news that comes from the ethanol sector. So ethanol economy. So I'll just quickly write. Yeah. So I hope by the time I finish this, I hope I get up and I see a lot of hi. And yes, so very nice. We have a lovely audience with us. A lot of you guys have given us a quick hi. So I'll just quickly give you a shout out. We have Kushal with us. We have somebody called Monopoly. Hi, Monopoly. Please don't be a monopoly. Monopolies are not good for the economy, man. So Monopoly is here. We have Darshan. We also have someone with a very, very long name, says money run again, stock markets investment. Then we have an iron fist with us. We have Mohammad sir, we have Vikas bhai, and we have Vijay bhai. So very good evening to all of you guys here and welcome to the live session. Let's start with the fundamental analysis or the macro analysis. Yeah. But before that, a big disclaimer. There are a lot of things to be covered in the fundamentals and the macros part, and I completely agree with you when you tell me that isne ye cover nahi kiya. Yeah, it's very difficult for one person to cover entire economic news, right? That's not something that I can do alone, and I cannot do it in a short span of time. So I have just select some interesting topics that happen every week, and I try to cover those topics. So if you guys want me to cover a particular topic for this week or for next week, you can let me know in the comments of this particular video. So you can type down in the comment section and I will solve your problems or any other queries you have, I will solve your queries right there. So let's start with the analysis and let's go back to the top cam. Let's start with gold rush. Why am I calling it gold rush? Well, India mein gold prices, the gold prices in India have now hit an all-time high, where everyone was talking about Nifty all-time high, Bank Nifty all-time high, all-time highs in maybe US, UK indices. Well, piche, in spite of not getting the entire attention, gold has gone up and gold has almost hit the all-time high. Now, why does this affect us? Well, it affects people in the market because it is going to dampen the demand in gold. So it is going to dampen gold demand. Since the gold prices have gone up, the gold demand is projected to go down. So if you guys are invested into gold companies, jewelry companies that use gold as a raw material, it might be a nice hidden opportunity to accumulate more of those stocks, because in the short term, it looks like this is going to negatively affect that particular sector. So this might be a good time to buy or to accumulate the stocks that are in the gold sector or the jewelry kind of a sector. But yeah, don't just accumulate any stock that you see, right? You have to do nice analysis, you have to do your own research and figure out if the company is good for the long term. Regardless what happens in the sector, the company matters, right? So if the company is good enough, this might be a nice hidden opportunity to really accumulate these kind of companies. Then another kind of companies another sector that people should have accumulated maybe last year, but they were giving a lot of bad words and they were actually against this sector, was the IT sector. IT sector underperformed the last year, but now the results are back and we've got results from Infosys, so I'll just write info. We've got, I think TCS ka result has come out. And I think Wipro result also came out today, right? And all of these guys, even HCL has in fact given an interim dividend as well.
So all of these guys' results seem to be outperforming the market. So when everyone was thinking IT is not going to outperform, IT is going to stay down, all of those things, now it seems like IT is slowly inching back into the race. Yeah. So IT seems to be coming back here. So this is very good for all the people who own their IT stocks. You all might be getting some nice dividend, some handsome dividend this quarter. So that is all about IT. There's not something I want to cover very specifically. Just wanted to say that IT results are coming and they're coming good. The third thing I want to cover is this cough syrup problem. Well, in 2022, around August or September, there was this company called Marion Pharma. They sent a batch of cough syrups to a country in Africa, and a lot of kids actually faced a lot of health issues due to the consumption of that cough syrup. And that is why all the cough syrup was actually sent back to India, and US FDA and all other sorts of health institutes raised problems with this particular company. And because of that, there is a black spot now on the Indian pharma sector. So there is a big black spot that's come on the Indian pharma sector now. So that is because of the Marion pharma company. They made bad cough syrups. So there's a lot of investigation going on here. And we are coming to know now slowly that there was a lot of impurities in that cough syrup that went unchecked, because of which there was a problem. Now this brings us to the pharma sector. Because of this, the entire pharma sector is being questioned. India's quality as a pharma producer is being questioned. So how this affects the pharma sector is, well, only time can tell. So I'll just write pharma question mark. This is sure to get some volatility in that sector. But how will it really affect the sector? Let's see the story play out. But nevertheless, it's a very interesting story that's taking place. Let's see how this affects the market. Let's see what kind of companies come under the purview of whatever happens. So this is something happening with the pharma sector. Then we have another sector right here. The Auto Expo happened. Yeah, just a couple of days ago, I think, and even yesterday as well. The Auto Expo is going on. It's the biggest Auto Expo event in India. And a lot of new launches happened. A lot of new EV launches happen. A lot of new partnerships happen. If you would have heard about this new company that's entered India, I might spell it wrong. Yeah, I might even pronounce it wrong. I don't know how it's pronounced. I think it's pronounced as Citroën, right? I'm not sure. I might be pronouncing it very wrong. I'm so sorry. This is the spelling, and the logo is something like this, right? It has two arrows as a logo. This particular company made a couple of deals and looks like they are quickly heading into the Indian market. So this is a new brand you can expect to see on your roads very quickly. So this is something that's happening as well. So please, if you're an auto fan or if you're invested into the auto companies, please keep attention to what's happening in the Auto Expo and what has happened in the Auto Expo. A lot of new launches happened, a lot of new companies were involved, and a lot of new partnerships happened, a lot of acquisitions happened as well. So if you have auto ancillary stocks as well, you must have noticed some movement in your auto ancillary stocks. So this is what happened in the auto sector. Then an unfortunate news of COVID. Well, I just feel like whining right now. Man, ये COVID जाता क्यों नहीं है? कितने time तक रहेगा COVID? From 2 years now, COVID has just been here on and off with us. It doesn't go away at all. Again now, there are some restrictions starting in states like West Bengal. So West Bengal mein COVID restrictions are coming in, and COVID restrictions could stay for a couple more weeks as well. So restrictions coming in might be bad for the entire economy. So agar ye badhta hai, if it increases, more restrictions come in, expect the market to be extremely volatile. If of course the restrictions go away and suddenly all the cases start falling down, now the cases are going up. If the cases start falling down, then of course you can expect the market to be little more less volatile and little more calm and going in the correct direction that we all want to go, right? So keep an eye out for COVID numbers as well. COVID is here, it's still not gone away and it's still causing a problem. So keep an eye out for COVID as well. We all thought it was gone, but it's not, unfortunately. Yeah.
The next thing I want to take is the Indian and EU trade. This week and next week, India is going to talk with EU, the European Union, and going to have some trade related policies. Here, what are the policies that we can expect? Number one, we can expect some quotas for Indian manufacturer. So I'll just write quotas here. Now, these quotas will allow Indian products and maybe Indian services to enter the European Union at a reasonable rate so that we can actually compete with them when it comes to prices. So quotas will be given for certain Indian sectors. This is up for talks, and of course there are going to be a lot of talks related to tariffs. Tariffs are nothing but taxes on import and export. So I'll just write import and EX. So tariffs ke upar there are going to be a lot of talk. You can expect tariffs to go down when it comes to exporting or importing from European Union. So iske bare mein there are going to be a lot of talk. If this turns out to be successful, well, it is going to be a great push for the Make in India story. So all of this in the end, well, there's too much here now, so I'll just remove all of these things. Yeah. The EU trade tariffs and the EU quotas will help us create that Make in India story. It will help us deepen the Make in India story, and it will help the production and the manufacturing units of India to grow and expand. If this happens, you can actually expect more capex expansion. So capex to already ho raha hai, but और होगा. So capex is nothing but putting capital into the market into structural things, yeah, like infrastructure, like roads, highways, bridges, dams, all of those kinds of things. Those automatically generate a lot of jobs, and they create logistics so that a lot of businesses can actually come and expand and form new different verticals. So that helps businesses grow and also gives a lot of employment. So this EU trade policy is going to get a lot of positives into the Indian economy if it goes well. So how it goes, we'll come to know by next Friday. So by the time I am here again on next Friday, we'll come to know how the talks go and what are the exact decisions that they take. Now, let's come to the one last final point. And the final point is ethanol economy. Well, I have covered the ethanol sector, I think, twice or maybe thrice during my workshop, where we analyze the entire sector and we learn how to pick the best stock from the ethanol sector. So I've done that a couple of times, and during both the times, I read that the government was thinking of increasing the ethanol consumption or ethanol economy, and they promised that they will increase it by 100%. So abhi, let's say one amount of consumption happens, they'll double the amount of consumption by 2024. This is what the government promises. So 100%, basically 2x by 2024. This is what the government promised. Yeah. Now, what is the government doing to take care of this promise? Well, the government is actually working on it, because today, as per the announcement given by the sources of Indian governments, it has been expected that the government is pushing for at least a 25 to 30% growth in the consumption just this year. So this year we can expect the ethanol consumption to go up. Now think about it. If this year government is pushing for 30%, by 2024 they want to push it to 100%, and let's say they keep pushing it forward, this is very good for all the people making ethanol. So producers of ethanol, manufacturers of ethanol, processors of ethanol, and even distributors of ethanol, all will see their business go up. They will see their business expand. They will see their volumes expand. And that is why if you are invested into an ethanol company and you're facing a lot of volatility because it goes up and down a lot, it's highly volatile, please hold on to that particular good company for some more amount of time, and I'm sure it is going to help you in the long term. Yeah. So this was all that I really wanted to cover. It is not super complicated, not super simple. So
it was very interesting that I got news from almost every sector today. So that is why I picked up these sort of things. So I'll just quickly run through it. I'll summarize very, very quickly. So let's come to the top cap. Very quickly, I'll summarize. Number one, gold prices are up. This is going to affect the gold demand negatively. Number two, IT results are coming out to be very good. This means that the IT businesses are doing well. This means that the IT businesses can still grow. So people who are saying that the IT business growth is gone, it's over, well, they might be wrong. Number three, cough syrup incident that happened in September is getting investigated right now. The main culprit involved is a company called Pharma. But because of this, there is a black spot on the entire Indian pharma sector, where everyone is questioning the entire Indian pharma sector's manufacturing methods and quality control. So this is bad for the pharma sector. Let's see how this story plays out. It's very interesting. The next thing is the Auto Expo. A lot of new automobiles, a lot of new vehicles revealed here, a lot of new companies have entered the market, and a lot of new partnerships are taking place. This is very good for the auto sector itself, because this means there is healthy competition happening. And if healthy competition happening, well, it gives rise to innovation and technology. So it's an absolute thumbs up from my side for the Auto Expo. So please check out if you're interested in the automobile industry from the Auto Expo. The next thing is a sad thing. COVID doesn't seem to be going away. It's very sticky right now. COVID seems to be coming back. A lot of states in India are taking restrictions, are taking supports for COVID, and China has still not recovered from COVID. So there's a lot of problem going on with COVID. So keep your eye on for COVID. Not just that, please keep yourself safe as well. Yeah, because COVID is coming back now. If you live in a large metropolitan city like Kolkata, Delhi, Bombay, please try using a mask in the public. Yeah, this is just for your safety. Of course, you don't want to use a mask, that's up to you. That's completely all right. But just as a precaution, please try using it. You never know when COVID cases are back. It just doesn't seem to go away. The next thing was the India-European talks. This is a big thing that I'm watching out for the next week. If this goes well, it is going to push the Indian economy entirely. If this doesn't go so well, then it might be a setback for the entire year. So what happens here is quite important. And finally, we talked about the ethanol sector or the ethanol economy. The government says that this year, the ethanol consumption will see a growth of about 25 to 30%. Yeah? And that is a very good thing for the entire economy. Well, how are they going to achieve it, or will they achieve it? That is something that we will see as time goes by. That is something we cannot really predict it right now. But this target looks very good. So this is good for people holding on to ethanol stocks, or people wanting to buy the ethanol stocks. So yeah, this is all about the macros today. With this, well, I would want you guys to post as many questions as you would like from as many sectors or from as many different dimensions and perspectives. Yeah, because it helps us as well, right? जब आप मुझे question पूछते हो, a lot of times I will not know the answer. And when I go and I read about the answer, I also end up learning a lot. Yeah? So I want all of you guys, if possible, in the comment section, post a question about anything random. Just ask how bonds work. Why are the gold prices going up? Anything like that, please put it in the chat. It would be lovely to see questions from you guys, because we really like people who are active here at LearnApp. Our tagline is be a doer. So be a doer. Don't just come to our live session and watch the live session and go away. Be a doer, and just like what a doer would do, bombard us with all the questions you have in your mind. Yeah? So even if they are unrealistic questions, you can just put it in the chat. We would love to see your comments. And yeah, we read all the comments that come in. So it's not like we're going to discriminate between who you guys are. So I hope that most of you will put in comments in the comment section below. So with this, well, thank you so much for joining us today. Thank you so much for giving your time out on a Friday evening.
And I hope that all of you guys have a lovely, lovely weekend ahead. Have a lovely Saturday and Sunday. And I hope that all of you guys relax as well. So with this, well, thank you for joining. And signing off, I am Vasant. And yeah, Sharma sir is not with us today here because he has some other work. We will get Sharma sir back next Friday, and I will also come back next Friday, and of course Mayank will be there with us to join. So we three will meet you again on next Friday. And if you want something new to happen, let us know. What new thing do you want us to do in the comments below? Yeah. So with that, signing off, this is Vasant, and take care and stay happy. Bye bye.